औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट लेक्चर जो हर क्लास के लिए है, जो हर क्लास के लिए है, 9th से लेकर 12th तक बहुत ही ज़रूरी, और ग्रेजुएशन लेवल के भी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ये क्लास। और आज मैं आपको इसी क्लास में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है पोएटिक डिवाइसेस, और उनको दूसरे नाम से हम पुकार सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन पहले देखेंगे कि पोइट्री होती क्या है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि हम आपको उतना ज़्यादा वीडियो नहीं होने देंगे, तो शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि पोएटिक डिवाइसेस क्या है या फिगर ऑफ स्पीचेस क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा, पहले पोइट्री देखेंगे। पोइट्री जो है इट्स वन ऑफ द जॉनर ऑफ लिटरेचर, और इसमें हम अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस को देखते हैं, फिर एक थॉट बनता है, तो उसी के ज़रिए फिर हमारी शायरी वजूद में आ जाती है। तो लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपको मैं दूसरे लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोइट्री की एक बेस्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो वर्ड्सवर्थ ने कही है। तो वो है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब है कि व्हेन यू आर एट पीस ऑफ माइंड, योर माइंड इज़ completely free, and you are in a tranquility state of mind, so you are able to compose anything what you want. Means your thoughts, your emotions are being reframed by the incubation of your mind, and when it comes to the fully form, comes into the fully form, you are able to compose the beautiful poetry. So tranquility of mind is very important, and when you are very much emotional, sensitive to your emotions, so you are able to give vent them. So simultaneously, this is the best definition of Wordsworth, that poetry is the spontaneous overflow of emotions recollected in tranquility. So ओके, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगा कि आज हम पढ़ेंगे कि पोइट्री की पोइटिक डिवाइसेस. सो देयर आर नंबर ऑफ पोइटिक डिवाइसेस in English language, and these devices play an important part. Without these devices, we will not be able to comprehend the poetry, or we will not be able to compose the poetry. We will not be able to understand the poetry, comprehend the poetry, and even able to write the poetry, even though we should have the best knowledge of these poetic devices. So let's see what devices are. So these are the devices which we usually use in the poetry or in the prose. If we talk about the figure of speech, if we talk about the prose, then it becomes the figure of speech. If we talk these devices in this poetry, then they are known as poetic devices, or we can say poetic techniques. Simultaneously, we have number of poetic techniques. One of the important thing that you need to know, the first basic thing, that is the rhyme. So what is a rhyme? Rhyme is the first step that you need to have during the composition of the poetry. That is that it is the terminal sound of a word, or it can be in the verse. For example, you have a word rate, so its terminal sound can be rate, bait, Kate, like that. So in a line you can see a rhyme as well, how to make the terminal sound in a particular line, in a particular verse, and even in a word. So this is one thing. So another thing is rhythm. Rhythm is also a pattern of sound. It's also a pattern of sound of the citrused, from the citrused and uncitrused syllables. Okay,
Rhythm is also a pattern of sound forward from the stressed and unstressed syllables. I have here a one line with you that I want to discuss. For example, how rhythm can be shown. A delinquent who lived on his own. A delinquent who lived on his own attempted to take out a loan. When the banker said no, the man asked with great woe how his library fee had been known. So you see the rhythm pattern. Rhythm pattern A B B A like that. So this is what we call that rhythm is also an important aspect of the poetry. And now we will move towards the important part that I have written here. What's metaphor? For example, metaphor, it's a figure of speech. Metaphor is a figure of speech or is a poetic device that is used usually in the poetry. And what is it? It's the comparison between the two unlike things. It's the comparison between the two unlike things. Two unlike things, but two unlike things. Comparison between the two unlike things, but they are shown as an identical. They are shown as an identical things. For example, he is a lion. He is a donkey. She is a moon. She is Katrina Kaif. She is Lata Mangeshkar. So, he is Katrina, she is Katrina Kaif means that she has been directly compared with a Katrina Kaif. So it's metaphor. So there is not any indirect comparison, there is direct comparison. I can say she is moon. She is not looking like moon, but she is directly moon. Means that she is as beautiful as moon. But it is the direct comparison. So she is moon, moon is here metaphor. He is lion, lion is here metaphor. Means that that person has been compared with that one. So this is the comparison between the two unlike things and with direct comparison. Now come to the second point, simile. Simile is also a figure of speech that I have written here is a figure of speech or it's a technique, poetic technique in which there is also a comparison between the two things or it can be the comparison between the two or more things. But one of the important things that you need to know in metaphor we didn't have connecting words, but in simile we have connecting words like such, like as, even though such is also used, but like and as are the connecting words which can show you the simile between the two things or which are used to show for the comparison. For example, I will say he is like a lion. Okay, तो like यहाँ पर जो word बना ये simile बना. She is like a moon. Okay, she is like a moon. She is not properly looking like a moon. She is like a moon. He is like a lion. He is not properly looking as a lion. He is looking like a lion. So he is like a lion. She is looking. She runs as fast as hare. वो इतनी तेज दौड़ती है जितना खरगोश दौड़ता है. So as and like are the connecting words. They are the connecting words, and by the dint of these two words, like and as, we are able to form the simile. Then then we have another figure of speech or poetic technique, that's hyperbole. Hyperbole is a statement or figure of speech that I have already discussed here, shown when there is a sort of exaggeration between the things. When there is complete exaggeration means that you are going to elevate the things up. You are, whether that can be exaggeration can be less, that can be bad, that can be worse, that can be good, that can be bad. For example, you can say, और इसी को कहते हैं कि किसी मामूली चीज की तारीफ करते करते धज्जियां उड़ाना. वो चीज उसकी अहमियत है ही नहीं कुछ, लेकिन आपने इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया तो उसको हम हाइपरबोलिक स्टेटमेंट कहते हैं. जैसे
कि 10,000 saw I at a gallons, ये वर्ड्सवर्थ की एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि उसको कहाँ पता था वर्ड्सवर्थ को कि भाई इतने सारे डेफोडिल्स हैं, क्या उसने गिने थे वहाँ 10,000 के डेफोडिल्स उसने एक ही झपट में देख लिया? नो, दिस इज जस्ट इन ऑर्डर टू शो द हाइपरबोले स्टेटमेंट कि उसने गिने कहाँ थे कि 10,000 पौधे वो गिनता नहीं। दिस इज जस्ट लाइक ए एग्जेजरेशन, एक बढ़ा चढ़ाकर उनको पेश करना जैसे उसने देख लिए थे। समझ आ रही? इसी तरह कोई भी सिचुएशन को आप देख सकते हैं जो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। देन वी हैव oxymoron, very important thing. Oxymoron is a statement in the poetry, or it's a poetic device that is used to show the contradiction, especially not especially in contradiction in terms of its words. When, because यहाँ पर लिखा है is a figure of speech in which two words of contradictory meaning are used to produce some sort of effect, to produce some sort of impact. तो इसी तरह these are the two words which show you some sort of contradictory meaning, and when they are going to show you the contradictory meaning, but those words have some impact, some effect on you. For example, we say sound of silence. So see, sound is what? Sound is a word where you can struck two things, it can produce sound, but silence has no sound at all. So there is the ambiguity of meaning in it, that sound of silence. So this is what we call in English language oxymoron. Then we have number of figure of speech as well. Simply we have discussed metaphor. Then we have an important thing that you need to know, that's alliteration. So alliteration is what? Alliteration means repeating. It's an important factor that we usually use in the poetry. It's a figure of speech or poetic device that we usually use in the poetry. Alliteration means it is the repetition of initial consonant sounds. It is the repetition of the initial consonant sounds in a particular line, in a particular verse, or in a particular statement that we use. For example, we have here salty strawberry means salty as strawberry as. So जहां पर हमने कॉन्सोनेंट्स को रिपीट किया, इनिशियल कॉन्सोनेंट्स को, जहां पर यानी इलिट्रेशन का मतलब वो होता है, वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम इनिशियल कॉन्सोनेंट्स को रिपीट करते हैं, हाँ, ताकि आपको, जैसे यहां पर एक और भी वर्ड भी है, कह सकता हूं चॉकलेट, चीवी, चीज। चॉकलेट देखिए आप, कॉन्सोनेंट है, चीवी ये भी सी है, एंड देन चीज यहां पर भी सी है। तो कॉन्सोनेंट इस तरह से हमारे पास कॉन्सोनेंट रिपीट, इनिशियल कॉन्सोनेंट ऑफ द नेबरिंग वर्ड जो रिपीट हो जाता है, तो वी कॉल दैट इलिट्रेशन। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव, जो हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें एक एजोनेंस। एजोनेंस जो है, एजोनेंस क्या होता है? इट्स आल्सो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस दैट्स यूज्ड इन द पोएट्री इन विच सिमिलर वोवेल साउंड्स आर यूज्ड। सिमिलर वोवेल साउंड, इसी तरह यानी कि वोवेल साउंड्स आर रिपीटेड, it's the similar vowel sounds of the stressed or unstressed syllables are used. इसमें हमारे पास stressed syllables, ये stressed syllable ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा stressed और unstressed syllable क्या होता है। तो when it's a device, मैंने कहा it's a assonance is a poetic figure of speech, a poetic device in which there is a similar vowel sound which is being repeated from the stressed or unstressed syllables that usually occur in the poetry. अब यहाँ पर एक ode to the Grecian urn की एक मैं आपको लाइन एक बता रहा हूँ, thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow toy. अब यहाँ पर देखिए still word, वहाँ पर भी वॉवेल साउंड इस्तेमाल हुआ, unravished यहाँ पर भी एक ही vowel sound I, and then bride, then quietness, and then the foster child, silence and slow time. यहाँ पर भी आपको हर जगह पे आपको I vowel sound इस्तेमाल हुआ है. So it is what we call that it is the repetition of the vowel sound of the stressed and unstressed syllables. तो इसी तरह से अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोइट्री के अंदर है, फिर उसके बाद ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज पर्सोनिफिकेशन.
जो मैंने यहाँ पर बोर्ड ज़्यादा नहीं है तो personification की बात, personification जिसको हम उर्दू में कहते हैं तमसील निगारी, and it is the figure of speech. Personification is a figure of speech in which there is in which inanimate objects, or we call say abstract ideas, are treated. Abstract ideas are created or treated or made as if they are looking human beings, as if they are looking human beings. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या आपके पास कोई और चीज़ है, तो आप उनको ऐसे मानते हो कि जैसे हमने उनको परखें, मतलब उनको 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 एक बनी नवा इंसान का रूप दिया है। यानी कि दो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, तो या कोई भी आप चीज़ आप ले सकते हैं जिसमें ये आपको पता चले कि हमने इसका मवाजना एक बनी नवा इंसान के साथ किया है, तो आपको पता चलेगा कि रियली इन रियल सेंस दैट्स नोन एज personification. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ, डेथ हैज एन आइसी हैंड्स ऑन किंग्स और ओवर किंग्स। देखिए डेथ क्या, आपको पता है कुछ पाँव होते हैं, कुछ उसके पैर होते हैं, नहीं, डेथ इज नॉन लिविंग थिंग ना। आपने देखा है, वी हैव सीन मेनी डेथ्स, बट वी हैव नॉट सीन हाउ डेथ occurs due to disease, but there is no shape of death, there is no any physical form of death, it comes and goes without showing any sign to the person. ये किसी को दिखाता नहीं है कोई साइन, कोई निशानी नहीं। सो तब हम कहते हैं डेथ हैज एन आइसी हैंड्स ओवर द किंग्स या ऑन द किंग्स। अब देखना है आइसी हैंड्स, क्या मौत के कुछ आइसी हैंड्स हैं जो मतलब, अब मौत के झटके में हर कोई फंस जाता है, उसको तो फंसना ही है। अब मौत के ऐसे आइसी हैंड्स नहीं है तो जिनके जरिए इंसान वो मौत हावी हो जाता है बादशाहों पर या आम इंसानों पर। सो इसी तरह से ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जाता है, तो आपको फिर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी over these poetic devices, you can ask me and you can subscribe my channel, that is Maqsood Ahmed Lohan, and you can subscribe that on। तो ऑलरेडी हमने वीडियोस जो बनाए हैं उनको भी पढ़िए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीडिंग comprehension of the poetry, especially from the students of 9th class to graduation level students. So I have given you the best that I was expecting myself, or I have prepared this topic, or I was having the knowledge of these things. So you must go through it. Automatically you will come to know what's poetry and how we will be able to go for the poetry, how to read poetry. That's an important thing. So these techniques that I have discussed, they are very helpful for you. Wish you all the best. Thank you. Have a nice day.